All right. Hello, guys. Good morning, everyone. So this is all about the All India Open Mock CLAT Logical Reasoning section, and we are going to go after this section specifically, and we'll talk about all the do's and don'ts, and also the strategy or the best way that you could have opted for, best approach that you could have opted for in order to go after this particular section and to excel at the same time. So विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारे सेक्शन में पैसेजेस थे उन पैसेजेस में हम लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए था, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, क्या क्या एक गुड स्कोर हो सकता है, टॉप थ्री एनएलयूज इफ यू आर आइंग एट व्हाट मस्ट बी द करेक्ट स्कोर और व्हाट मस्ट बी द गुड स्कोर देयर, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. Good morning everyone. I hope we all are ready. So I think I should start now. So when I talk about this mock specifically, the overall difficulty level, if you'll ask me कि भाई क्या difficulty level था इसका, तो I would say कि easy to moderate difficulty level था. Easy on it is more on the easier side. ठीक है, तो थोड़ा सा easier side पे था. हाँ, there could have been issues for those जिन्हें थोड़ा सा economy वाले passages में problem जाती है. So the point is whenever you identify that there is some issue with some kind of some genres of like the passages that are given to you, you need to understand this thing. You should start reading the content. All right, so if you're facing any issues like in dealing with the economic passages, Hannah, the passages coming from economy, so you must start working upon the dialects and jargons that are used there in economy, and at the same time read more content of economy. This is how you should go after the things. All right, so let's talk about all the things here. So question number 1 to 5, 1 to 6, this first passage is there. ओके, चलिए देखते हैं. तो अगेन एज आई ऑलवेज टेल यू, व्हाट आर द की फैक्टर्स, व्हाट आर द टेक अवेज, उन पे अपन बात करेंगे. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव kept in your mind, because this is the biggest problem people face, or like you guys face, कि sir I have read the content that was there, given there in the passage, but I don't know what to remember, what I mean, like I forget everything, है ना? So you forget things because you want to remember all that is written over there. तो अब ये समझने की कोशिश करो. देखो, पूरा याद रखने की कोशिश करोगे तो फंस रहे हैं, तो यार नहीं करना है ना. पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, हाँ, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वो आइडिया आपके ऑथर के लाइन ऑफ थॉट में. ऑलराइट, चलिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन. इट रीड्स, carbon neutrality is something of a religion in Germany, but faith apparently has its limit. Witness the unfolding drop off in sales of electric vehicles as Berlin withdraws costly subsidies. So, this is talking about the very first thing is carbon neutrality. And with reference to this carbon neutrality, what are they talking about? They are mentioning the drop off in the sales of electric vehicles specifically. And why is it happening? This is happening because the Berlin, or because in Germany they have withdrawn the subsidies. So subsidies को उन्होंने क्या कर लिया है? Withdraw कर लिया है. So listen, now this is what I was talking about. I mean, like, you have gone through the first paragraph, but what must be there in your mind? So in the back of your mind, you must remember key points that are there. All right. So it is talking about carbon neutrality. It is talking about like decline in the sales of electric vehicles because they have withdrawn the subsidy. You have kept the thought. You know the thought. All right. This is what I was talking about. The main explanation is the end of Berlin subsidies for EVs and hybrids at the new year. Until December, the subsidy had offered up to 9,000 euros split between consumer and producers for EVs with a net list price below 40,000 euros. Hybrids in that price range received 6,750. Berlin has ditched the subsidy for hybrids entirely and cut the payout to 4,500 for EVs below 40,000 euros. ठीक है, further cuts the subsidy level and eligibility are scheduled over the next year. अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो कट है, अब उन्होंने हाइब्रिड के बारे में बात करें तो हाइब्रिड से तो दे आर डन विद इट. हाइब्रिड तो उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया. बट इफ यूर टॉकिंग अबाउट ईवीज, तो ईवीज के लिए उन्होंने थोड़ा सा अलग कर रखा है. तो ईवीज के लिए 40,000 के लिए 4,000
500 कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि फर्दर कट्स आर एक्सपेक्टेड, तो आगे भी कट हो सकते हैं। इन रिड्यूसिंग सब्सिडीज बर्लिन मेड द सेंसिबल पॉइंट दैट इंक्रीजिंग adoption of EVs and hybrid signaled consumers are embracing the cars and the more mature market no longer requires taxpayer support. अब उसने क्या बोला है कि भाई हाँ, जब आप एंडोर्स कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और आपने एंडोर्स कर लिया उस प्रोडक्ट को और आप उसको यूज करने लग गए हो, तो फिर यहाँ पर हमें और टैक्स पेयर का सपोर्ट चाहिए नहीं है, तो हमें सब्सिडीज नहीं लेने की जरूरत है वहां पर, क्योंकि in itself the market has grown, all right, it has stabilized and the market is growing. So in that case there is no requirement of offering the subsidies, ठीक है। Yes, yet subsidies still seem to make a big difference. One reason for January's sharp decline in sales is that EV and hybrid purchases boomed at the end of the last year as cars buyers scrambled to cash in on the subsidies while they still were available. So what were they thinking? So the something बेटा, स्प्लिट इन बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर का मतलब यहां पर हुआ कि उनके बीच का जो लाइन सब्सिडी जो डिफाइन कर रहा था, वो सब्सिडी के कारण फिर वो चीजें जो सेल्स इंपैक्ट हुई है उसको वो डिफाइन कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो इन विथ रेफरेंस टू द सेल्स, द डिक्लाइन इन द सेल्स, कि भाई वहां पर वो चीज यदि वो लोगों के बीच में एक प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा था तो वो डिसरप्शन में क्यों आया, फिर लोगों ने कम खरीदना क्यों चालू कर दिया, तो उस चीज को डिफाइन करता हुआ है। और एट द सेम टाइम व्हाट दे आर सेइंग इज the decline is also there because, and also this indicates that subsidy is playing a very vital role over there, because when it was there in operation in the last year, ठीक है, last part of the last year, that point of time people bought it, ठीक है, तो people bought those cars over there, और वो चीज अब थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई क्योंकि सब्सिडीज नहीं है, तो वो फायदा पहले ही ले चुके हैं उस चीज का। Automakers aren't optimistic that demand will bounce back this year. So they're saying, ki, okay, this is not expected that the sales is going to normalize in the days to come. The Association of the Automobile Industry estimates that the total sales of EVs and hybrids will fall 8% this year compared to 2022, with the decline concentrated among hybrids, sales expected to fall 20% that no longer receive taxpayer सपोर्ट। अब क्या बोल रहा है कि हाइब्रिड में 20% होगा और ईवीज में 8% होगा। हाइब्रिड में 20% क्यों होगा? क्योंकि टैक्स पेयर्स जो है वो टैक्स पेयर सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, मतलब सब्सिडीज वहां पर उनको नहीं मिल रही है, ठीक है। मूविंग फर्दर, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पैसेज, दिस ईयर विल थस बी अ मार्केट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिमांड इन द Vatican of the climate change belief. Politicians in the West have used subsidies and mandates to drive EV sales, no matter that they aren't as green as their advertising. The cars are only as carbon friendly to operate as the power grids they refuel from, and Berlin's refusal to embrace nuclear power means Germany is burning more coal to cover for the end of natural gas imports from Russia. Then there's the environmental cost of mining for all that cobalt, copper, and lithium for EVs and their batteries. तो देखो, इनके इन्वायरमेंट पे एक नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट्स इस तरीके से भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दीज थिंग्स, है ना, क्रिएट दीज कार्स, वो तो आपको माइन करने पड़ेंगे। तो आप कॉपर की, कोबाल्ट की, लिथियम के बारे में बात करोगे तो उनकी बैटरीज के लिए ये वाली माइनिंग भी जरूरी है। सो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज गोइंग नेगेटिव। फिर, if consumers want to buy EVs, go for it. But what does it say about their appeal if people need subsidies to buy them? We'll do all, don't worry about that. Moving further to the questions. So question number one here says, what is the main idea of the passage regarding the end of subsidies for electric vehicles and hybrids in Berlin? अब उन्होंने क्या बोला है कि मेन आइडिया क्या है? The main idea of the passage regarding the end of subsidies for electric vehicles and hybrids in Berlin. तो भाई जब डिक्लाइन हुआ तो डिक्लाइन का रीजन उन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं सब्सिडीज, तो ये सब्सिडीज ऑफर नहीं करने के लिए फिर उनका मेन आइडिया क्या था? तो ए बोलता है, subsidies for EVs and hybrids have increased demand for these vehicles and should continue to be offered. Now the author is not of the opinion that this should continue. He's not giving his opinion over there regarding this, so A should be eliminated. Moving further towards the second one, यहाँ पर क्या बोल रहा है? Second says subsidies for EVs and hybrids have been ineffective in driving sales. So this is again invalid because of subsidies offered, there was increase in the sales. All right, and this is mentioned there in the passage. C says subsidies for EVs and hybrids have a significant impact on sales, and consumers still need to purchase these
they need them to purchase these vehicles. This might sound a bit convincing. So let's just give it a soft call. Subsidies for EVs and hybrids have led to a decrease in sales of these vehicles, and their environmental benefits are questionable. Now, the Vatican City, so Manu, they're talking about Berlin. Okay, now have a look at it. Whenever you talk about the main idea questions, may you need to understand that there should be topic at discussion identified. So you must identify the topic at discussion, and with the combination of topic at discussion, you need to understand what is the concluding part saying. So आपको वहां पर उसका जो concluding part या final claim उसका है, उसका combination यहाँ पर लेना पड़ता है. तो if you'll talk about C Calcutta and D Delhi, these two are convincing. These two are confusing. So when you get stuck in between two choices, what do? You always work upon the difference in between these two choices. तो इसके बीच का difference क्या निकल के आ रहा है? The C answer option here is saying subsidies for EVs and hybrids have had a significant impact on sales and consumers still need them to purchase these vehicles. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि consumers को अभी भी चाहिए वो. ठीक है, और डी बोलता है subsidies for EVs and hybrids have led to a decrease in sales of these vehicles and their environmental benefits are questionable. So वो क्या बोल रहा है कि सब्सिडीज को एंड करने के लिए मेन आइडिया क्या है? तो यदि वो बोल रहा है कि कंज्यूमर्स स्टिल नीड देम, तो ये तो जिसके फेवर में चला जाएगा कि नहीं, अब तो अभी तो आपको ऑफर करना पड़ेगा. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंड करने के लिए मेन आइडिया क्या है? तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डी दिल्ली, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट सम दे आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स अंडर questionable circumstances. So that's why the correct answer option is D Delhi for question number 1. I hope you understood this. Question number 2. Which among the following best represents a flaw, if any, in the author's arguments regarding subsidies for electric vehicles and hybrids in Berlin? So इसके बीच में इसके लिए फ्लॉ क्या है? ठीक है, तो देखो फ्लॉ है, यदि उसने फ्लॉ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ. Still, you need to spot what is being talked about in the passage. So the most relevant statements you need to hunt for in the very first place. So always go after the things which are relatable to what is being talked about in the passage first. Okay? So A, the author fails to consider the positive impact of subsidies on the growth of the EV market. So they are straight away saying कि okay, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उनके नेगेटिव थे, नेगेटिव के कारण हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें कोबाल्ट भी चाहिए, हमें लिथियम भी चाहिए, हमें कॉपर भी चाहिए. तो ये उसका एक पॉइंट था. तो इस बारे में बात तो हुई है. We'll just give it a soft call. We'll not consider it correct. Second, the author overlooks the environmental benefits of EVs and only focuses on the negative aspects. ठीक है, अब इसने ए से और बी से कैसे बात करी? वो सब्सिडीज के बारे में बात कर रहा है और इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है. तो उन्होंने क्या बोला? दी ऑथर फेल्स टू कंसीडर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन द ग्रोथ ऑफ द ईवी मार्केट. ठीक है, ईवी मार्केट में ग्रोथ के बारे में बात हो रही है. और दूसरा क्या बोल रहे हैं? द ऑथर ओवरलुक्स द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ ईवीज बट दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन न्यूट्रलिटी ओवर देयर. सो कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात की हुई है, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा. सी बोलता है द ऑथर प्रोवाइड्स इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट सब्सिडीज आर द ओनली रीजन फॉर द डिक्रीज in sales of EVs and hybrid. So this only reason here is problematic because this is not being talked about. So यहाँ से C eliminate हो जाता है. The author overlooks the fact that the power grids that EVs refuel from determine their carbon friendliness. Even if they determine their this is a vague statement, because if they determine their carbon friendliness, so carbon friendliness can be null and void as well. Determination does not mean it is going to be on the positive side always. Okay, so that means D Delhi is eliminated, and by the fact of elimination and also comparison, the correct answer option is A. Yeah, yes, same. Fair, which one of the following best represents an inference that can be made from the passage? Inference. Uh, for question number 1, the requirement of the passage. Listen, understand.
what is being asked to you is the very first thing that you must understand, because उसके बिना तो गड़बड़ हो जाएगी, आप कुछ और आंसर ऑप्शन मार्क कराओगे और किसी का आंसर ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 1 गलत हुआ है, सो ये हाई चांसेस हैं कि आपने ये मिस्टेक किया हो, बिकॉज वो बोल क्या रहा है, what is the main idea of the passage regarding, now it is not saying कि पूरा का पूरा पैसेज का मेन आइडिया बताओ, उसने वहां पर नैरो किया क्वेश्चन को और वो बोल रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द सब्सिडीज. So you must be talking about some issues that were there in offering subsidies. You must not talk about positives. So C is talking about a positive, D is talking about a negative. End करना है, negative की बात करो. Answer option D is the answer. All right, this is how you must have gone. You must have gone after it. ठीक है. Third one, which one of the following best represents an inference that can be made from the passage? अब हमें यहाँ पर क्या identify करना है? We need to identify an inference over here, a correct one. A says the author believes that subsidies should not be given to buyers of EVs and hybrids. Author का opinion is not given कि यार ये सही है या गलत या करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए. वो वहां पर उस चीज को न्यूट्रली लेकर चला गया. ठीक है, तो ए एलिमिनेटेड. द ऑथर थिंक्स दैट द डिक्रीज इन सेल्स ऑफ ईवीज एंड हाइब्रिड इज अ गुड थिंग. नाउ अगेन यू कैन नॉट सिंग इट इज नॉट से इट इज अ गुड थिंग बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एनालाइज थिंग्स कि व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट इज द प्रो एंड कॉन ऑफ दीज. सो ये वो बात कर रहा है. ठीक है, तो ये बुरा है, ये अच्छा है, ये हम बोल नहीं सकते. C, the author is skeptical about the long-term appeal of EVs and hybrids without subsidies. ठीक है, अब इसको हम अभी सॉफ्ट कॉल रख रहे हैं. D, the author thinks that EV and hybrids are not environmentally friendly. अब environmentally friendly तब होगा जब उनके positives जो है उनको overshadow कर देंगे negatives. या हाँ, तो तब जाके उन्होंने क्या बोला, कार्बन कोबाल्ट माइनिंग के बारे में बात करी है, उन्होंने कार्बन माइनिंग के बारे में बात करी है. सो दे टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, बट why are we going towards C Calcutta? Have a look at the end of this particular passage. If consumers want to buy EVs, go for it. But what does it say about their appeal if people need subsidies to buy them? So this creates a doubt. So that is why the term skeptical here gets its reference, and that's why the correct answer option should be C Calcutta. So again, this is what we do in critical reasoning. As we define what critical reasoning is in terms of a microscopic analysis of any of the piece of text that is given to you. So when you talk about a microscopic analysis of any of the piece of text that is given to you, it means what? Even if you've got an indication, it should be registered in your memory. If there is any turn and twist, all right? So वो चीज यहाँ पर यूज हो रही है आपकी इस चीज को, इस टर्म को डिफाइन करने में के लिए जो स्कैप्टिकल लिखा हुआ है. There are a lot of things. There are a lot of things. And answer, I just need to tell you this thing. All right. Please, if you're joining the YT live session, all right, and if you're coming and if you want to communicate with the faculties, I would strongly recommend that you come here by your own name. All right. So if I cannot be addressing this gaming and with FFKOP, whatever it is. तो थोड़ा सा ये करो कि अपने नाम से आओगे ना, तो it would be better for us to communicate with you and interact with you and answer your doubts eventually. All right, so please do that, otherwise I will have to like ignore your comments. ठीक है. Fourth one, which one of the following, if true, would most weaken the author's argument that electric vehicles are not as environmentally friendly as advertised? देखो फिर अगेन बात वही है कि क्वेश्चन स्टेम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Which one of the following, if true, would most weaken? अब weaken क्या करना है? Would most weaken the author's argument that electric vehicles are not as environmentally friendly as advertised. तो इसको weak करना है, मतलब क्या बताना है? इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है. ठीक है, चलो ए क्या बोलता है? EVs are powered by green energy sources such as wind and solar power. अब यदि ग्रीन एनर्जी सोर्सेस के लिए लेके आओगे तो भाई फिर वो आपकी माइनिंग ऑफ कोबाल्ट और वो सारी के सारे इश्यूज जो आपके सामने आए हैं
वो सारे के सारे इश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ए आंसर ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो वीकन कर देगा, बिकॉज दिस वे इट इज गोना बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ओके। B. The mining of materials for EVs and their batteries is not as environmentally damaging as the author claims. If it is not as environmentally damaging, it means it is still environmentally damaging. And still environmentally damaging in itself is weak, because still कितना amount है, किस impact के साथ वो जा रहा है, वो हम नहीं बोल सकते। तो B Bombay eliminated. C. The use of EVs results in lower carbon emission than traditional gasoline-powered vehicles. Now, again, comparison is there. What if gasoline-powered vehicles are having the impact 100%, and it is if EVs results in lower carbon emission means it is having 98%. So, can you say 98% is environmental friendly? No, we cannot say that. So, just because it is lower than by some other variant, so it does not mean that it is environment friendly. Okay? D. The government's withdrawal of subsidies for EVs is causing a decrease in the demand for them. Again, it is not at all talking about it being environmental friendly. तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके पास क्या निकल के आ जाता है? ए आगरा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Moving further to the next one, which one of the following has the author used to support his claims in the passage? भाई देखो, हर जगह उसने क्या बोला है, कितना यूरो था, कितना यूरो से कितना यूरो हो गया, फिर डिक्लाइन कितना परसेंट है, सेल्स कितना एक्सपेक्टेड है, 8% एक्सपेक्टेड उसने बोला क्या था, 8% एक्सपेक्टेड उसका था आपके डिक्लाइन ईवीज के लिए, एंड हाइब्रिड्स के लिए 20% था। देखो, आई हैव गॉन थ्रू दिस पैसेज हियर, बट हाउ डू आई रिमेंबर दिस? I remember this because of this. You need to understand this. So, the key factors that you identify there, you will be able to remember all those. Okay? Chalo. Yeah, Anirban, so I'm moving further. Whatever doubts are there, जो भी डाउट्स आपके रह जाते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं हम लोग एक साथ देख लेंगे बेटा, ठीक है? तो वन ऑन वन वाले जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे कर लेंगे। अभी एक उन्होंने बोला पर्सनल ओपिनियन, एक उन्होंने बोला लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा थर्ड उन्होंने बोला इमोशनल अपील्स। तो इमोशनल अपील्स एंड पर्सनल ओपिनियन आर स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड। बट द पॉइंट इज, अब यदि आपको लगेगा कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो एनीथिंग दैट द ऑथर इज सेइंग वी नीड टू कंसीडर दैट द ऑथर लॉजिकल फर्स्ट। सो हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट निकलता है वो हमें फेवर में लेके जाता है कि हम चूज कर लें किस चीज को, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को। चलो, इवन इफ यू हैव सेलेक्टेड कि उसने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए, देन डू लेट मी नो कि वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपको क्यों लग रहे हैं? बिकॉज ही इज प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स इन फेवर ऑफ वट एवर ही इज सेइंग। All right. So if he is presenting the facts and observation over there, what do you consider that? That is the statistical data. So straight away, even if you find out that logical argument is correct, the exact answer option should be statistical data. Okay. Then the sixth one. Which one of the following does the author likely agree with based on the passage? He is likely to agree with. Matlab, in the very first place, we need to identify the argument and then supporting elements to that argument. A. Berlin's decision to withdraw subsidies for EV and hybrids was the correct choice. Was the correct choice लिख रखा है इसने यहाँ पर, ठीक है? चलो देख लेते हैं। B. Subsidies still make a big difference in increasing the adoption of EVs and hybrids, which is a good thing. Now, again, if you are correlating this, which is a good thing, so this is a good thing. This opinion should be given by the author, and at no point of time in the passage there he's giving his opinion in this regard. So हमने which is a good thing के basis पर eliminate किया B Bombay. C. EVs and hybrids are not as environmentally friendly as their advertising claims. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है तो ये कोडेड है तो ये तो अग्री करेगा, बट ये अभी मैंने एलिमिनेट नहीं किया है। D. Consumers should not be free to buy EVs without government support. Should not be free. Again, if you are saying should not be free means author is giving his opinion and saying कि this should be given. So again, this is not mentioned there. तो अब A और C बचता है। Berlin's decision to withdraw subsidies for EVs and hybrids was correct choice. अब जिस बेसिस पे अनिर्बन आपको समझना चाहिए, उसने क्या बोला, आपका जहां से आंसर निकल रहा है वहीं से ये C कैलकाटा यहां पर जस्टिफाई होगा।
इन अब जैसे अनिर्बन ने यहाँ पे बोला सर इन क्वेश्चन नंबर 3 shouldn't it be A as author has said Berlin has made a sensible point, so isn't he implying that we should decrease sensible? Berlin has made a sensible point in decreasing or just getting away or decreasing the subsidies given to the hybrids and EVs with a particular regard not in general. जब आप उनके सेल्स को लेके बात कर रहे हो तो जब वो ये बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रांग हो गया है, इसको अब टैक्स पेयर सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो एक अलग बात है। जब वो एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब बात अलग है। तो एक रिकॉर्ड में सेंसिबल बोला, इट डज नॉट मीन कि जनरली हमने उसको सेंसिबल बोल दिया। दैट इज वाई वहां थर्ड का भी आंसर ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए और यहां पर भी ए नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज C Calcutta. So overall difficulty level, if I gauge about of this particular passage was easy to moderate, more on the moderate side because let's consider that margin of error कि भाई हमारे पास यदि इकोनॉमी वाले पैसेजेस या इकोनॉमी की बात करते हुए पैसेजेस आ जाते हैं तो हमें पहले ही धक्का लगता है कि भाई ये क्या बात हो रही है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा पंगा हो सकता है। बट आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू कुड हैव इजीली क्रैक्ड 4, इजीली क्रैक्ड 4, इट मींस व्हाट, आपको कितने 3.5 तो यहां से ऐसे मिलने ही चाहिए थे। और यदि आप टॉप में जाने के लिए बात कर रहे हैं तो टॉप में जाने के लिए बात करने का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 6 5 करेक्ट आपके होने चाहिए थे। 5 करेक्ट यदि आपके होने चाहिए थे का मतलब क्या होता है, 4.75। सो लेट्स कीप इट लाइक दैट। ठीक है, तो 3.5 to 4.75 फॉर द फर्स्ट पैसेज। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन अगेन। जब मैं आपको बोलता हूँ कि पैसेज में आप पढ़ रहे हो तो अप्रोच कैसे फिक्सर होगी, तो हाउ टू कम अप, हाउ शुड यू कम अप with the best approach to go after the passage? You need to scan the question. Don't read those questions, scan the questions. Okay, title खत्म, concluded, conclusion पूछा है, ये कुछ पर्टिकुलर एक सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन होगा। assumed, assumption पूछा है, concluded, conclusion, role of the first paragraph. Okay, okay, just give me a minute. But when they're talking about mining all those substances जिनका impact negative पड़ सकता है, there hybrid का मतलब क्या होता है, partially electronic vehicles। ठीक है अनिर्बन, ठीक है, तो वो बेसिक सेंस हमें वहां पर लगाना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए माइनिंग करने की जरूरत है तो वो रिलेट कर जाएगा दोनों से, हाइब्रिड से भी रिलेट कर जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेट कर जाएगा बेटा। ठीक है, चलो। सो द नेक्स्ट पैसेज हियर ये बोलता है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन's latest budget is noteworthy for the emphasis she has laid on the government's commitment to move towards net zero carbon emission by 2070. So what are you talking about? You're talking about the latest budget, and with reference to the latest budget, our commitment to net zero carbon emission by 2070 वो वहां पर डिस्कस्ड है। तो ये एक टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस्ड है। As an article presented in the World Economic Forum's annual meeting at Davos last month notes, I am not apply. Anirban, I will talk about it later once I'm done with it. ठीक है, थोड़ा सा गलत जा रहे हो, मैं बताता हूँ कैसे। बट अभी इस फ्लो को चलने देते हैं, ये पैसेज खत्म करते हैं। As an article presented at the World Economic Forum's annual meeting in Davos last month notes, India holds the key to hitting global climate change targets, even its given its sizable and growing energy needs. ठीक है, so वो क्या बोल रहे हैं? India holds the key to hit the global climate change targets given its sizable growing energy needs. With the country's population set to overtake China sometime this year, India's appetite for energy to propel the economy is set to surge exponentially. किस चीज के लिए? एनर्जी का जो एपेटाइट है दैट इज सपोज टू सर्ज एक्सपोनेंशियली, मतलब द रिक्वायरमेंट विल
be boosted. The transition to green alternatives from the current reliance on fossil fuels is therefore an urgent imperative and an opportunity to leverage this move to catalyze new industries, generate jobs on a sizable scale, and add to overall economic output. अब उन्होंने क्या बोला है कि ट्रांजिशन टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द करंट रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इस चीज से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, जॉब्स जनरेट होंगे, है ना, और एट द सेम टाइम ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट भी आएगा. इन अ नॉट टू दिस बजट 2023-24 devoted a fair amount of space to the green industrial and economic transition needed. With the electric vehicle revolution poised to take off as every automobile major rolls out new EV models to tap demand, the availability of indigenously produced lithium-ion batteries has become a necessity, especially to lower the cost of EVs. The budget hearteningly proposes to exempt custom duties on the import of capital goods and machinery required to manufacture lithium ion cells used in EV batteries. This ought to give a fillip to local companies looking to set up EV battery plants. So what are they saying? Whatever is required for you to create the lithium ion cells or lithium ion batteries over there, the government has given you proper room to import all those. This would boost or this would pave way for all those जो कि अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं कि वो बैटरी प्लांट्स को सेटअप करें, तो उससे उसका कॉस्ट भी लोअर होगा. एंड दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर, ठीक है. दिस इज व्हाट द ऑथर इज इन्फॉर्मिंग अस रिगार्डिंग व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकन इन फेवर ऑफ दिस. अनदर की प्रपोजल, अब ये दूसरा क्या रिस्पेक्ट है उसका, अनदर की प्रपोजल. अब एक चीज यहां पर ये समझने की कोशिश करना कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ हियर, बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस द क्वेश्चन देयर कि what is the role played by the first paragraph. The first paragraph is introducing the topic. Then they are talking about what should be done and now what situation India is creating. What is there in the budget when we talk about these EV battery plants? What are the opportunities if we tap this option? Okay? So this is what was given in the first paragraph. Second paragraph, another key proposal relates to the establishment of a viability gap funding mechanism to support the creation of battery energy storage systems with a capacity of 4,000 megawatt. ठीक है. Energy storage systems are crucial in power grid stabilization and essential as India increases its reliance on alternative sources of power generation, including solar and wind. So, what are you talking about? They're talking about energy storage systems specifically. So, if you will keep this thing in your mind, they are talking about energy storage systems, so you will be able to correlate with it. कि भाई energy storage system किस किस चीजों के लिए जरूरी है. अब हम बोल रहे हैं कि हम alternative sources of power generation पर जाएंगे, solar और wind पे भी जाएंगे, तभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बहुत एसेंशियल है स्टेबलाइजेशन के लिए कि हमारे पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हो. ठीक है. विथ विंड टर्बाइन फार्म्स एंड सोलर photovoltaic projects characteristically producers of variable electric supply, battery storage systems become enablers of ensuring the electricity these generators produce at the peak output is stored and then supplied to match the demand arriving at the grid from households or industry consumers. Ms. Sitaraman also set aside a vital 8,300 crore towards a 20,700 crore project for building an interstate transmission system for the evacuation and grid integration of 13 gigawatt of renewable energy from Ladakh. ठीक है. अब ये लद्दाख में उन्होंने क्या किया, उसका एक एविडेंस दिया, तो ये सपोर्टिंग एलिमेंट या फैक्ट हो गया. ठीक है. फिर आगे, with its vast with its vast stretches of barren land and one of the country's highest levels of sunlight availability, Ladakh is considered an ideal location to site photovoltaic arrays for producing a substantial capacity of solar power. The transmission line will help address what had so far been the hurdle in setting up solar capacity in the region, given its remoteness from India's main power grid. अब यहां पर देखो, द ट्रांसमिशन लाइन विल हेल्प एड्रेस व्हाट हैड सो फार बीन द हर्डल इन सेटिंग अप सोलर कैपेसिटी इन द रीजन गिवन इट्स रिमोटनेस फ्रॉम इंडियाज मेन पावर ग्रिड. मतलब व्हाटएवर बजट दे हैव allocated फॉर दिस, आई मीन लाइक
दिस ट्रांसमिशन लाइन, ऑलराइट, सो वो चीज किस तरीके से फेवर करेगी, बिकॉज रिमोटनेस उसकी वहां पर थी, जो हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स था, और इसी के कारण वो अनएक्सेस था। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज हुआ। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइटल। अब ये टाइटल के बारे में पूछ रहा है। टाइटल के लिए आप एक चीज कर सकते हो, हमेशा टाइटल के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक तरीके से हिटल ट्रायल वहां पे काम कर सकता है। यू कंसीडर दिस वन टू बी करेक्ट। If you consider this correct, you need to go to the passage and cross check. Is there any content in the passage which is now irrelevant because you have selected this? If there is any content which is going pointless in the line of discussion because you have selected this option, it means you are selecting a narrow title. So that ways you will be able to eliminate that. Okay. So which title would best suit the passage describing the Indian government's initiative towards reducing carbon emissions and promoting green energy? अब ये Indian government के initiative के reference में पूछ रहा है. First, a leap towards a greener future. All right, a leap towards a greener future जनरल स्टेटमेंट है. लीप बोलोगे तो ऑल टुगेदर वो नेशनल पावर ग्रिड से स्टोरेज तक आपको हर एक चीज ट्रांजिशन लाइन से लेके हर एक चीज वहां पर इंक्लूडेड होगी. तो दिस वन सीम्स जनरल देयर, सो लेट्स जस्ट गिव इट अ सॉफ्ट कॉल. लेट्स टॉक अबाउट बी, द misguided steps towards sustainability. Can we justify the term misguided? So be eliminated. See, the ignored opportunities in the energy sector. Ignored opportunities, it is not about ignoring the opportunities or ignored opportunities. Now, the government has not turned a blind eye towards it. We are going to exploit that. We are going to tap those things, to tap those options. So if we are tapping those options, we must not choose a negative choice from there. D, the uphill battle against climate change. Now, it is not just about uphill battle, it is about what courses of action the government is taking, and it is moving towards a positive direction, moving in a positive direction. So, correct answer option here must be A, Agra. Even by the fact of elimination, you could have got it. So, seventh is A, Agra. I hope यहाँ पर कोई issue नहीं होना चाहिए. 8. Which one of the following can be concluded from the information present in the passage? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसके बारे में बात हो रही है. तो ए यहाँ पे बोल रहा है दी इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिव ऑफ द ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी. नॉट सपोर्टिव, straight away eliminate this because the author has nowhere said that the government is not supportive. On the other end, ये कॉम्प्लीमेंटिंग चीज है कि भाई हाँ यहाँ पर इन्होंने सही किया कि ये बजट अलोकेट किया है. तो फर्स्ट वन चला गया. Second, the transition to green energy will not result in job creation or economic growth. Will not result. Again, factually invalid, contradicting the passage. Eliminated. C, the government is supportive of the establishment of battery energy storage system. Yes, support तो कर रहा है government, तभी तो budget allocate किया है. D, the government is not considering exempting custom duties on the import. They have considered it. They have exempted it. तो यहां से वो वो आयन वाली जो बैटरीज के लिए उन्होंने बोला था. एंड ऑल्सो ये थोड़ा और नैरो हो जाएगा बिकॉज आप बोल रहे हो ईवीज के बारे में, तो ये डी एलिमिनेट होता है. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैलकाटा यहां से निकल के आता है. एथ वन इजी वन, दोनों के दोनों बहुत इजी चॉइसेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल फॉर एग्जेम्प्टिंग कस्टम ड्यूटीज ऑफ द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी ऑफ दीज बैटरीज मेंशन्ड इन द पैसेज. ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल. क्या होगा? ए, टू इंक्रीज द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स से बच रहे हैं, ना कि उन पे रिलाय कर रहे हैं. तो ए एलिमिनेटेड. बी, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ विंड टर्बाइन फार्म्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स. तो ये सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स और विंड टर्बाइंस के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एनर्जी स्टोरेज वहां पर मेंशन किया हुआ था. तो ये एनर्जी स्टोरेज वाला पॉइंट था, ना कि ये. तो बी बॉम्बे एलिमिनेटेड. सी, टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज. तो लिथियम आयन बैटरीज जो है ये डायरेक्ट मेंशन है आपके पास वहां पर सेकंड पैराग्राफ में. डी, टू डेवलप द ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ग्रिड इंटीग्रेशन, ग्रिड इंटरकनेक्टेडनेस थी. ओके तो यहां से डी एलिमिनेट होता है. करेक्ट आंसर ऑप्शन 9 सी कैलकाटा. 10th, which one of the following has the author assumed on the basis of their arguments to hold true? क्या assume किया होगा? A बोलता है climate change is not real and does not pose a threat. Then why are you talking about, or why are you even complimenting the government if they are taking one step ahead in this direction? So A eliminated. B, the transition to renewable energy sources will not have any positive impact. Will not have any positive impact. With this much conviction on negative direction, you can't say it.
be eliminated. See, the government policies and investments in green energy will not result in any reduction in carbon emission. अब वो बोल रहा है कि the Indian government holds the key. तो वो जब बोल रहे हैं कि दे होल्ड द की, व्हाट आर यू टॉकिंग, विच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट सौरभ? वहां पर अच्छे से मेंशन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी विल नॉट रिजल्ट इन रिडक्शन इन द कार्बन एमिशन, अगेन गोइंग ऑफ द ट्रैक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास एक ही बचता है, दैट इज डी दिल्ली, नन ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड हियर। ठीक है, 11th, as per the passage, which of the following can be concluded from the information present in the passage? Again, you need to hunt for the conclusion over there. A. India is not interested in transitioning to green alternatives. Then why are they taking this much, these many steps? बता रहा हूँ सौरभ। बी, द गवर्नमेंट इज नॉट कमिटेड टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन। स्ट्रेट अवे देखो, ये इतना इजी पैसेज था बिकॉज जो ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट थे वो सारे डायरेक्टली वो ऑब्जर्वेबल थे कि भाई ये तो डायरेक्टली पैसेज को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पैसेज को फैक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले यदि पॉइंट्स आ रहे हैं और आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर वो गड़बड़ बात है, बिकॉज ये तब होता है जब आप पढ़ नहीं पाए ढंग से, आपका कंप्रीहेंजन ही कंप्रोमाइज था। C, the government has proposed a number of measures to support the transition to greener and alternatives, and yes, budget allocation से लेकर आपका energy storation से लेकर interconnectedness establish करना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। D, the budget does not allocate any funding कुछ दिया ही नहीं, तो D eliminate हो गया। आंसर इज C, Calcutta there also। ठीक है, 9th में डी दिल्ली बोलता है द गवर्नमेंट इज नॉट कंसीडरिंग एग्जेम्प्टिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर ईवी बैटरी प्रोडक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैराग्राफ वहां पर उन्होंने कस्टम ड्यूटीज का में एग्जेम्पशन दिया है। तो हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया, इसलिए वह एलिमिनेट हो गया बेटा सौरभ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, सेकंड पैसेज, वी आर 50% डन, है ना, 50% टास्क हमारा खत्म हो गया। Which of the following best describes the role of the first paragraph in the context of the passage? तो हमें पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने क्या बोला है, अब हम पैसेजेस के ऑप्शन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से ही हिंट लेके देखेंगे। Setting the stage for the key proposal made by Finance Minister Nirmala Sitharaman. So whatever was there in the budget, okay, every point can come here. तो यहां पर इसको हम रख लेते हैं अभी। फिर बी बोलता है प्रोवाइडिंग अ बैकग्राउंड ऑन द इंडियाज एनर्जी नीड्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशनिंग टू द ग्रीन अल्टरनेटिव्स। नो बैकवर्ड नॉलेज, नथिंग लाइक, ठीक है बता रहा हूं देवेश, नथिंग लाइक दिस कि आपने पहले क्या हुआ, पहले के कारण क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात नहीं करी, बजट से स्टार्ट करके आगे क्या होगा उस बारे में बात करी, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। सी, discussing the significance of budget 2023-24 in relation to global climatic target change। ठीक है, क्या with reference to only global climate, चलो ठीक है इसको भी हम रख लेते हैं यहां पर। ठीक है, फिर डी, outlining the need for the availability of indigenous produced lithium ion batteries। तो यहां से डी एलिमिनेट होता है ना, वी आर स्टक इन, डी क्यों एलिमिनेट होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास बच रहा है ए और सी। ठीक है, ए क्या बोल रहा है, सेटिंग अप द स्टेज फॉर द की प्रपोजल मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एक ये बात हुई, और दूसरा discussing the significance of budget 2023-24 in relation to global climate change targets। ठीक है, अब ए पे हम पैसेज पे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, लेटेस्ट बजट, अब उन्होंने बोला है कि has led on the government's commitment to move towards net zero carbon emission by 2070। फिर वो बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल प्रेजेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में डेवोस में जो हुआ, उन्होंने बोला कि इंडिया होल्ड्स द की टू हिटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स। ठीक है, फिर अपन आगे जाके बोल रहे हैं एपेटाइट फॉर एनर्जी सर्च होगा, फिर वो वहां पर बोल रहे हैं कि इंडिया का ट्रांजिशन टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स क्या है। ठीक है,
फिर उन्होंने यहाँ पर आगे बात करी है कि विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन पॉइज्ड टू टेक ऑफ एज एवरी ऑटोमोबाइल मेजर रोल्स आउट ए न्यू ईवीज, तो ईवीज क्या ला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लिथियम आयन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब उन्होंने एक्चुअली जो टॉपिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वो टॉपिक क्या बोला है, उन्होंने बोला है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेटेस्ट बजट इज नोटवर्दी for the emphasis she has laid on the government's commitment to move towards net zero carbon emission by 2017. Now, you need to understand the very first line that is mentioned here. Why is the author complimenting Finance Minister Nirmala Sitharaman's latest budget? Because she, in the budget, has given emphasization upon the commitment of government towards net zero carbon emission by 2070. Now come to the options. Have a look at the option. Discussing the significance of budget 2023 and 24 in relation to global climate change targets. How? जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना विजन टुवर्ड्स मूविंग टू विजन ऑफ मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन है, वो डिस्कस किया है। तो ज्यादा रिलेवेंट आउट ऑफ दीज टू क्या होना चाहिए फिर? जो हमारे की प्रपोजल्स हैं उनको डिस्कस करना। अब इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करोगे तो दिस वन वाज इजी। आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इजीली आप क्रैक कर सकते थे। 4.75 ले सकते हो, 3.5 फिर यहाँ पे ले सकते हो, बट ये लोअर एंड बनेगा, ये हायर एंड बनेगा वहां से, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पैसेज है, सेकेंड लास्ट पैसेज ऑफ दिस मॉक। मेन आइडिया पूछा है, आगे बढ़ते हैं 14 में। इन्फर्ड पूछा है और एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो इन्फर्ड है वो पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन रीजन पूछा हुआ है, मगर मेन रीजन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए पूछा हुआ है फिर से। 16th, would best suppose the author's argument, for author's argument के बाद that लिखा हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को लेके चलना है। Which of the following weakens the author's argument? अब right to health in Rajasthan, उसको वीक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 18, which sentence plays a crucial role in summarizing the purpose of the Right to Health Act in Rajasthan? ठीक है, तो यहाँ पर जनरली इससे आप एक बार फिक्स कर सकते हो कि आपको सीखना कैसे। इन दी एंड आई विल टेक ऑल द डाउट्स, ठीक है। यदि मेरे समझाने के बाद कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज इंश्योर कि आप उसको बाद में पूछ रहे हैं, तो यदि वो आपका स्पेसिफिक डाउट है तो मैं उसको बहुत अच्छे से फिर एड्रेस कर दूंगा, ठीक है बेटा। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम एक बार इस चीज को खत्म करें। It is confounding how something that is tendently good in ethical and legal terms can run into a wall of opposition built on narrow professional and commercial interest. अब उन्होंने क्या बोला है? It is confounding. What is confounding? Something that is stringently good in ethical and legal terms. जो ethical और legal terms है उस चीज में वो good है ना? But it can run into a wall of opposition built on narrow professional and commercial interest. So आपके प्रोफेशनल और कॉमर्शियल इंटरेस्ट के कारण वो चीज ऑब्जेक्शंस में आ रही है, ठीक है। इट इज कंफाउंडिंग। As in the case of Right to Health Act that was passed in Rajasthan last week and the unprecedented kerfuffle that followed, with doctors in the state vehemently protesting what they called a draconian law, the right to health is in sync with the constitutional guarantee of right to life. अब उन्होंने क्या बोला है? The right to health is in sync with the constitutional guarantee of right to life and the other components of the directive principles. So they are saying that this is something which is ethical and good in legal terms, but opposition वहां पर हुआ है। आपने नैरो प्रोफेशनल कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बोला है, मतलब वो जब उसको ड्रैकोनियन लॉ बोल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनका नैरो प्रोफेशनल कॉमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे, and the other components of the directive principles, that no person seeking health care should be denied it, कि भाई यदि मुझे हेल्थ केयर चाहिए तो डिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। It should not be denied on the grounds of access and affordability, and this is an acceptable proviso
The Rajasthan Right to Health Act 2022 addresses these key issues of the access and affordability. किस चीज की बात हो रही है? एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तभी भी आप मेडिकल एड जो है वो डिनाई नहीं कर सकते किसी की, ठीक है? It seeks to provide protection and fulfillment of rights, equity in relation to health and well-being of for achieving the goal of healthcare for all through guaranteed access to quality healthcare for all residents of the state without any catastrophic out-of-pocket expenditure. तो भाई expenditure हमें उसको आप sideline all these factors accessibility और affordability इसको हटा के भी आपको मिलनी चाहिए medical aid if you need it. The law, which also provides for a social audit and grievance redress, gives every resident of the state the right to emergency treatment without paying a single paisa to any healthcare institution and specifies that private healthcare institutions would be compensated for the charge incurred for such treatment. So government is anyways going to give that charge to those hospitals and those entities in operation. But ये चीज वहां पर एट द सेम टाइम जब वो बंदा आपके पास आया तब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, तब आपको उसको हेल्थ केयर देना पड़ेगा. The doctor who came out in large number to protest the law on the streets of Jaipur said that they were distrustful of the government's promise of recompense for expenses incurred for treating patient during an emergency. To the charge, अब वो क्या बोल रहे हैं? They were distrustful of the government's promise of recompense. जब उनको लग रहा है कि ये बोल तो रहे हैं पैसे वापस करेंगे मगर ये हमें पैसे देंगे नहीं, ठीक है? To the charge that there is no detailing of the process, health right activists have pointed out that it would be a function of the rules, not the law itself. The protesting doctors also claim to be apprehensive of the government's interference in their functioning once the law is enforced. Ironically, all of them believe that healthcare is a right of the people, only they believe that the state would have to be the sole provider. However, this is scarcely the first such exposition of the right to health. In 1989, the Supreme Court observed that every injured citizen brought for medical treatment should instantaneously be given medical aid to preserve life, and thereafter the procedural criminal law should be allowed to operate in order to avoid negligent that. Having transformed the progressive idea into law, Rajasthan should now strive to gain the trust of the doctors through demonstrable actions. It is also incumbent upon the doctors to rise above the differences and work with the government to save human life. अब उन्होंने दोनों के लिए हिदायत दे दी कि राजस्थान गवर्नमेंट should now strive to gain the trust of the doctors through demonstrable actions, and it is also incumbent upon the doctors to rise above the differences and work with the government to save human life. So ये दोनों के लिए बात हुई, ठीक है? So it was all about the yeah, so it is all about that law, है ना, which is totally in sync with the right to health, है ना, and right to life. ये इसके बारे में फिर there comes an instance जहां पर the government जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, फिर वहां पर वो डिस्कशन पूरा का पूरा जाता है. तो इजी टू कंप्रीहेंड, बहुत ज्यादा कुछ टफ यहाँ पर कंप्रीहेंशन नहीं था, आपको सिर्फ ध्यान से इसको पढ़ना था. लेट्स सी कि क्वेश्चंस में क्या होता. क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following best represents the main idea of the passage? The Right to Health Act in Rajasthan is a draconian law that violates doctors' right. That draconian law, क्या हम इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ये तो डॉक्टर्स का कहना है. B, the Right to Health Act in Rajasthan guarantees access to quality healthcare for all residents of all the state without any catastrophic out of pocket expenditure. So this is what he has explained regarding the act. So ये यहाँ पर है तो सही, सिर्फ सही है अभी, ठीक है? C, the Right to Health Act in Rajasthan interferes with the functioning of private healthcare institutions. This is an allegation जो कि वो लगा रहे हैं, ये सही है, हम ये नहीं बोल सकते, तो C eliminated. D, the Right to Health Act in Rajasthan is unconstitutional and violates citizens' right. Again, this is factually incorrect. They are saying it is totally in line with right to live, right to life. So D Delhi eliminate हो जाता है. अब आपके पास एक करेक्ट चॉइस है, दैट इज बी बॉम्बे. सो समटाइम्स व्हाट तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, कई बार यू वांट द बेस्ट आंसर ऑप्शन इन द वर्ल्ड टू बी रिटन ओवर देयर,
in critical reasoning section, and that does not happen always. So you might also get stuck in a situation where you're supposed to take a call in between the devil and the deep blue sea. So you must be ready for that. Sort of how the right to health act in Rajasthan interferes with the functioning of the private healthcare institutions in the state. They are saying once the law is established and it is in action, it is expected that the government will interfere. So this is an allegation that is put forth by the doctors association that are there in protest. क्या आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट दिया हुआ है जहां पर गवर्नमेंट ने उठाकर कोई इंटरफेरेंस किया हो डॉक्टर्स के साथ? अभी तो अप्लाइड ही नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं कि इट इज इंटरफेयरिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस? तो दैट वुड बी इनवैलिड. सो सी वहां से एलिमिनेट होता है. द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर 13th इज बी, बॉम्बे. 14th, what can be inferred from the passage about the Rajasthan Right to Health Act? Right to Health Act के बारे में क्या inference निकाला जा सकता है? First one says the act has faced opposition from doctors in Rajasthan. भाई ये लिया तो जा सकता है, हो तो रहा है. B, the act guarantees emergency medical treatment to all the residents. ठीक है. C, the act has been passed in other states besides Rajasthan. No information given. D. The act does not address the issue of medical affordability. It addresses. तो यहां से डी एलिमिनेट हो जाता है. अब हमारे पास बचते हैं यहां पर दो चॉइसेस. एक चॉइस जो है वो हमारा क्या बोल रहा है? द एक्ट हैज फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम डॉक्टर्स इन राजस्थान. एंड बी, बॉम्बे हमारा क्या बोल रहा है? द एक्ट गारंटीज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल रेसिडेंट्स. नाउ द पॉइंट इज, हम जब 14th के बी आंसर ऑप्शन को देख रहे हैं, वहां पर हमें दोनों सही लग रहे हैं. भाई ए भी हमें सही लगेगा, हमें बी भी सही लगेगा. अब जब ए और बी दोनों हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो फिर क्या पंगा हो सकता है? अब देखना पड़ेगा वहां से. The Act guarantees emergency medical treatment to all residents is a mentioned line. And this one might be a paraphrased statement, but it is not directly mentioned. और क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? इन्फरेंस का. तो हमें क्या लेना चाहिए? इम्प्लाइड. यदि वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए. करेक्ट तो ए और बी दोनों है. हाँ, इन द लाइन अनिर्बन, यानी इन द लाइन ऑफ राजस्थान की, राजस्थानी देखोगे तभी भी देख लो. यदि मैं लिख देता कि राजस्थान के रेसिडेंट्स, तभी भी क्या करते हैं आप? ये देखते हैं कि क्या वहां पर पूछा, इन्फ्रेंस है, तो फिर आप उसको उस तरीके से आपको कंसीडर करना होता. 15th, what is the main reason for the doctors in Rajasthan to protest against the right to health? By main reason क्या है? ये बोलता है the law guarantees access to quality healthcare for all the residents of the state. भाई ये है तो, ये लॉ ऐसा कर तो रहा है, मगर ये पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट नहीं है वहां पर. तो यहां से ये एलिमिनेट होता है. बी, द लॉ सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स. ठीक है. अब प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स, ये पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे प्रॉब्लम नहीं है. उनको प्रॉब्लम है कि हमारी फंक्शनैलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा. सी, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू कंपनसेट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट फॉर इमर्जिंग ट्रीटमेंट चार्जेस एंड दे आर स्केप्टिकल अबाउट दिस कंपनसेशन कि भाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो दैट वाज अ पॉइंट. Let's talk about D. The doctors are in favor of the law but are apprehensive about the government's interference in their functioning. तो वहां पर उन्होंने क्या बोला है कि भाई उनकी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस होगा. फिर बात वही है, मेन रीजन जब आप जाके वहां पर पैसेज में पढ़ेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं. अब उन्होंने उसको बोला है ड्रेकोनियन लॉ. फिर उन्होंने क्या बोला है? जस्ट गिव मी a minute. Okay. The doctors who came out in the large numbers to protest the law on the street of the Jaipur said they were distrustful of the government's promise of recompense for expenses incurred for treating patient during an emergency. So the main point that they have said there straight away was this कि आपने मेन पॉइंट वहां पर क्या बोला
कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है कि कंपनसेशन वापस नहीं मिलेगा। बट देखो, जब उसने दूसरा पॉइंट लिया कि यार ये अप्रीहेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस है, तो उन्होंने ऑल्सो बोला तो सेकेंडरी वो ये कर रहे हैं, तो मेन पॉइंट आपका यहां से ये कंसीडर होगा। ठीक है मौली, आपको आंसर ऑप्शन भी बोलना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन भी बोलना पड़ेगा। ठीक है। अब थर्ड में यहां पर आपने क्या बोला, मैं उसी का आंसर कर रहा था मौली। तो apprehensive about the government's interference and this is some additional concern that they have also लिखा हुआ है वहां पर। और आपने पूछा क्या है, मेन रीजन क्या है? मेन रीजन में एडिशनल रीजन बोलोगे क्या? नहीं, आंसर ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, आंसर इज सी कैलकाटा। समझ में आया? 16th, which one of the following would best support the author's argument that the Right to Health Act in Rajasthan is an important step supports towards ensuring access to healthcare for all the residents? Support करना है हमें इसे। ओके मौली बता दे। A. A survey conducted in Rajasthan found that the majority of residents are currently unable to access affordable healthcare. अभी उनको affordable healthcare नहीं मिल रहा है, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है। B. Several other states in India have already passed similar healthcare, so comparison never works when you talk about strengthening the argument. So comparison को आप avoid करते हो, तो comparison वहां से गया। C. Health experts have praised the Rajasthan Right to Health Act as a model for other states to follow. अब एक बात बताओ, आपने एक्चुअली किसके बारे में बात करी? आप हेल्थ के एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। डी क्या बोल रहे हैं? द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ अपोजिंग गवर्नमेंट लेड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। तो यदि हिस्ट्री है अपोज करने की, तो वो जस्टिफाइड था या नहीं, उस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो यहां से डी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद आंसर ऑप्शन ए एंड आंसर ऑप्शन सी। ए बोलता है अ सर्वे कंडक्टेड इन राजस्थान found that the majority of residents are currently unable to access affordable health care। और सी बोलता है health experts have praised the Rajasthan Right to Health Act as a model for the other states to follow। Now A addresses a minor part of it। अब उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिया कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं है, मतलब हेल्थ केयर है। अनिर्बन वही आंसर ऑप्शन, वही वहीं पर मैं लेके जा रहा हूं। ए और सी में फंसे। अब ए और सी में डिफरेंशिएट करोगे। सी बोलता है हेल्थ एक्सपर्ट ने राजस्थान राइट्स हेल्थ एक्ट एज अ मॉडल ऑफ अदर स्टेट्स टू फॉलो, मतलब ये कंप्लीट मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। सुमन्यु समझने की कोशिश करो, अनिर्बन एंड सुमन्यु की मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पूरे के पूरे हेल्थ एक्सपर्ट ने क्या किया, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट के बारे में बात किया। और ये क्या बोल रहा है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, सिर्फ अफोर्डेबल ही करना है ना, हेल्थ केयर तो है। ये तो पूरे के पूरे हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है। तो ए इन द लाइट, ए एंड सी व्हेन यू कंपेयर दीज टू, ए इज नैरो एंड बी इज जनरल व्हेन यू टॉक अबाउट दैट एक्ट और दैट लॉ दैट इज पास देयर। सो सी शुड बी selected as the correct answer option. Again, if you ask me, is A incorrect, sir? No, it is not incorrect. It is incorrect because we have a better choice. It is not comparison. It is a compliment. They are saying ki, okay, this is some prototype that can be followed by some other states also. This is something which is up to the mark. Let's others should also follow this. This is not comparison. Because others are doing it, that is why Rajasthan should also do it. That is comparison. Okay. Access to healthcare and access to affordable healthcare, two different things. Molly, access to healthcare and access to affordable healthcare are two different things. Yes, Sumanyu, because now A, if you talk about, so it is only the passage was only talking about affordable healthcare, or was it talking, the main argument of the author regarding this law was not only about affordable healthcare, it was about
affordable healthcare and offering excess of healthcare also. So A is only talking about affordable one. So वहां से eliminate हो जाएगा. अनिर्बन मैंने आपको देखो बेटा बहुत अच्छे से समझो उसको अपोजिट लेके जाओगे तो समझ नहीं आएगा हमेशा आंसर्स मार्क करने की ट्रिक को समझो स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाओगे वरना और स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाओगे तो आगे भी आंसर्स गलत होंगे ए और सी में फंसना वैलिड है ठीक है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है सी ने बोला हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव प्रेज्ड द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट यहां पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने उसको करेक्ट माना है पहली बात ये हम कंपैरिजन नहीं कर रहे कंपैरिजन का मतलब क्या है अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि बाकी सारे लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न पे सीआर सॉल्व करते हैं इसलिए आकाश को भी वैसे ही सीआर सॉल्व करनी चाहिए दिस इज कंपैरिजन आकाश के सीआर सॉल्व करने का तरीका अच्छा है इसलिए ये बाकी लोग भी कर सकते हैं दिस इज नॉट कंपैरिजन यहां पर मैंने आकाश के सीआर सॉल्व करने की टेक्निक को कॉम्प्लीमेंट किया है एंड Sumanyu, just because excess and affordable, these two terms are written, it does not mean they're talking about the first option is talking about accessibility as well as affordability. Now, it is saying a survey conducted in Rajasthan found that the majority of residents are currently unable to access what? Affordable healthcare. Means healthcare is existing, it is accessible, but it is not affordable. समझ में आया सो आई होप इतना एक्सप्लेनेशन अभी के लिए वैलिड है और यदि कोई और दिक्कत जाती है तो इन दी एंड वी विल कवर दिस नाउ 17th मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है जहां पर भी आप लोगों को गड़बड़ लग रहा था मैंने सब एड्रेस करने की कोशिश की है एक बार और सोच के देखना जो बोल रहा हूं मैं समझ में आएगा कि कहां गलत जा रहे हो 17th which one of the following weakens the author's argument about the right to health act in Rajasthan वीक करना है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को हमें वहां पर ए बोलता है द लॉ माइट इंसेंटिवाइज डॉक्टर्स टू प्रोवाइड लो क्वालिटी हेल्थ केयर माइट ओके बी the law might lead to an increase in out of pocket expenditure for patients ठीक है out of pocket expenditure बढ़ा देगा C the law might lead to a shortage of doctors in the state अब ये shortage of doctors how ठीक है the law might lead to an increase in bureaucratic interference in the healthcare bureaucratic interference अब देखो सारे में उन्होंने might लगा रखा है तो उस बेसिस पे तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता ठीक है अब ये समझना पड़ेगा कि वेग क्या है बिकॉज इसमें से तीन आर्ग्यूमेंट्स वेग है और एक बेटर है क्यों क्योंकि उसका एविडेंस हमें पैसेज में मिल रहा है आपने क्या बोला आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे थे ना डॉक्टर ने बोला ना और आप क्या बोल रहे हो यहां से ये सही है ऑथर का ओपिनियन क्या है कि ये तो टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल है और बाद में उनका ऑब्जेक्शन क्या था उनका ऑब्जेक्शन ये था कि गवर्नमेंट यदि ये हो जाएगी तो इसमें ऑल्सो ये चीज हो सकती है कि वो इंटरफेयर करे ठीक है द लॉ माइट लीड टू एन इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस इन द हेल्थ केयर ये उस पॉइंट को जो कि वहां डॉक्टर्स वाला पॉइंट था अगेंस्ट ऑथर जो डॉक्टर्स का एलिगेशन था उसको स्ट्रेंथन कर रहा है इसलिए डॉक्टर्स जो ऑथर है उसका ओपिनियन या उसका आर्ग्यूमेंट यहां से वीक होगा ठीक है अब ए बी और सी को एलिमिनेट कैसे करा सर ये तो समझ में आ गया कि डी अपोजिट जा रहा है डी वीक करेगा मगर ए बी और सी वीक क्यों नहीं करेंगे द लॉ माइट इंसेंटिवाइज डॉक्टर्स टू प्रोवाइड लो क्वालिटी हेल्थ केयर क्यों हाउ ये बताओ हाउ कैसे बोल रहे हैं हम ये इसका एविडेंस क्या है हमारे पास दे आर ड्यूबियस कि वो कंपनसेशन नहीं देंगे कंपनसेशन नहीं देंगे इसके बचने के क्या तरीके हैं डॉक्टर्स के पास कोई भी रेफरेंस पैसेज में है आपके पास नहीं एलिमिनेट हाउ का आंसर नहीं है बी द क्लेम माइट लीड टू एन इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर पेशेंट्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगेन कैसे कोई रेफरेंस लो द लॉ माइट लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर कैसे होगी अगेन एक पॉइंट जो कि वहां से ऑफ जा रहा है अब जब यहां पर मेरे पास दो साइड्स थे ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूं पहले
अनिर्बन अगेन विच क्वेश्चन विच ऑप्शन, ये आपको बोलना पड़ेगा. अनिका आई डोंट थिंक. ओके, लेट मी टेल यू हाउ दिस, व्हाई दिस हाउ थिंग कैन नॉट बी देयर ऑन डी. देखो बहुत अच्छे से समझना बेटा. एक ऑथर का ओपिनियन हमारे पास आया, और एक हमारे पास ओपिनियन आ गया किसका, डॉक्टर्स का. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वीकन करना है किसका, ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीकन करना है. राइट टू हेल्थ में ऑथर ने क्या बोला, इन लाइन है, इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है, ये बोला उसने. ठीक है. फिर उन्होंने बोला यहां पर एक्सेस टू ऑल होगा, इन शॉर्ट. ठीक है. फिर उन्होंने बोला कि ये जो इनका एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर को आप अवॉइड कर दो, उसके अलावा आपको वहां पर एक्सेस मिलना चाहिए. अफोर्डेबिलिटी और एक्सपेंडिचर ये सब हटा दिया. ये ऑथर का कहना था. यस और नो, अग्री और डिसअग्री. डॉक्टर्स का कहना क्या था, पहली बात, ये कंपनसेट नहीं करेंगे. सेकेंडली, ये इंटरफेयर करेंगे. यहां तक अग्री करते हो. अब एक बात बताओ, इंटरफेयर करेंगे, ये कंपनसेट नहीं करेंगे और ये इंटरफेयर करेंगे. अब आप बोल रहे हो कि ये हाउ डी पे कैसे अप्लाई होता है. ऐसे, मेरे पास रेफरेंस है, पैसेज में लिखा हुआ, मैं मन से नहीं बोल रहा. ऊपर यदि ये बोलोगे कि लो क्वालिटी हेल्थ केयर होगा, कैसे, मन से बोलोगे. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैसे. सर ऐसा तो होगा ही ना. सर शॉर्टेज हो जाएगा डॉक्टर्स का, कैसे. सर ये तो होगा ही ना, कैसे होगा. पैसेज में कैसे रेफरेंस लूंगा. आपने मुझसे बोला ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, मैं बोलूंगा इन्हीं ने बोला, डॉक्टर्स ने, कि इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा. जब इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, ये इनका पॉइंट है, और डॉक्टर्स को यदि मैं सपोर्ट करूंगा तो ऑथर को वीक करूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स को लेके ऑथर ने अपोजिट व्यू दिया है. दैट मीन्स इट विल गो अगेंस्ट व्हाट द ऑथर वाज सेइंग, एंड इवेंचुअली इट वुड वीकन. समझ रहे हो बात. मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द 18th वन. Which sentence plays a crucial role in summarizing the purpose of right to health in Rajasthan? So, crucial role. A. The law, which also provides for a social audit and grievance redress, gives every resident of the state the right to emergency treatment without paying a single paisa to any healthcare institution. ठीक है. ये बात कर रहा है किस चीज के लिए, उसके मनी वाले एस्पेक्ट के लिए बात कर रहा है. ठीक है. B. The doctors who came, Anirban, in that case, यदि मुझे डी मिलता ही नहीं और मुझे तीनों ही मिलते, फिर मैं ए मार्क करता. यदि मेरे पास डी नहीं होता तो, तनु, दैट्स नॉट एन इशू, यू कैन स्टिल mark A Agra and get a minus 1.25. I don't have any issue with that. But the point is, जब हमारे पास reference है, I'm teaching you how to do it. Right? It's up to you. I mean, like, you can still mark A. सो अनिर्बन तभी मैं ये मार्क करता, बिकॉज डी का फिर मेरे पास रेफरेंसेस तीनों के नहीं होते, फिर मुझे इन्फरेंसेस एक्सप्लेनेशंस पे जाने की कोशिश करता, तब जाके मैं कहीं किसी तरीके से, कुछ और ऑप्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, फिर वही बात हो जाती, डॉक्टर्स का शॉर्टेज तो एलिमिनेट होता, तो फिर मैं ए और बी के बीच में फंसता, और ए और बी के बीच में फंसता तो फिर उस तरीके से फिर वहां पे कॉल लेता. ठीक है. 18th, पहला मनी के बारे में बात कर रहा है. बी द डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर्स टू प्रोटेस्ट द लॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर said they were distrustful of the government's promise of recompense of expenses incurred for treating patients. ठीक है. तो बी बॉम्बे
यदि आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर इन्होंने कंपनसेशन के बारे में बात करी है। See, ironically, all of them believe that healthcare is a right of people. Only they believe that the state would have to be the sole provider. अब उन्होंने बोला है कि भाई सारे के सारे ये बिलीव करते हैं कि भाई ये तो राइट है, मगर वो ये बोल रहे हैं कि स्टेट वुड हैव टू बी द सोल प्रोवाइडर, हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टेट करेगा प्रोवाइड। ठीक है। फिर डी, द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 addresses these key issues of access and affordability. Now again, अभी क्रूशियल रोल इन समराइजिंग की बात हुई थी, ये मनी की बात कर रहा है, इट इज देयर इन दिस पॉइंट। ये कंपनसेशन की बात कर रहा है, इट इज देयर इन दिस पॉइंट। ये इस आयरनी के बारे में जो बात कर रहा है कि ये राइट टू पीपल है, इट इज देयर इन दिस पॉइंट। सो अगेन मेन आइडिया में जब करेक्ट चॉइसेस दी हुई हैं तो गो विद द जनरल वन विच इंक्लूड्स द अदर करेक्ट चॉइसेस देयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बाय दैट फैक्ट। बिकॉज यहां पर जाओगे तो नैरो है, फिर तुम एक्सेस की बात करो, फिर यहां पर बी बॉम्बे में जाओगे तो ये सिर्फ कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है, फिर तुम एक्सेस के बारे में बात करो, सी के बारे में बात कर रहे हो तो डॉक्टर्स का बिलीव क्या है, सिर्फ यही बात हो रही है। तो राइट टू हेल्थ एक्ट इन राजस्थान को हमें समराइज करना था। समराइज करके यदि मैंने एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों चीजें बोल दी तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। कंसाइज होना चाहिए, वो समरी की बात हो रही है वहां पर। तो सिक्स्थ, दिस was a bit on the moderate side. So out of 6 questions, 4 questions generally I can take on the higher side. तो 6 में से 4 आप लेते हो तो 3.5, और 6 में से 3 यदि आप लेते हो तो 3 करेक्ट 3 इनकरेक्ट 2.25। ऐसा हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलना होगा। ठीक है। ठीक है। और इस चीज में जब आप समरी वाले बात कर रहे हो ना, समरी की आप बात कर रहे हो स्ट्रेट अवे, तो आप ये समझने की, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत नैरो और स्पेसिफिक थॉट्स पे जाने की कोशिश ना करते हुए जनरल थॉट्स पे जाना है। जब हम जनरल थॉट्स पे जाएंगे, हाँ, जब हम जनरल थॉट्स पे जाएंगे तब हम लोग एक हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होगी। बिकॉज यदि मैं ए के बारे में बात करता हूँ, सिंपली वो बोल क्या रहा है, द लॉ विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल ऑडिट एंड ग्रीवियंस रिड्रेस gives every resident of the state the right to emergency treatment without paying a single पैसा। तो तुम ये सोचते हो कि ये देखो, अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा टू एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो जब मैंने बोला है कि यू विल गो आउट देयर, यू विल नॉट हैव टू गिव इवन अ सिंगल पेनी एंड यू विल गेट द ट्रीटमेंट। सो मैं ट्रीटमेंट के किस रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं? आकाश सीआर में अच्छा पढ़ रहा है इसलिए मॉक में उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मॉक में अच्छे मार्क आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, मगर सीआर में अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने यहां पर उसका स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन दिया कि आकाश सीआर में अच्छा कर रहा है तो मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इवेंचुअली आप बोलो सर मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, यस मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो वहां पर थॉट बोल रहा है, मगर थ्रू व्हाट, उसका तरीका क्या है उसको डिस्कस करने का। तो आप क्या पकड़ते हो, आप पकड़ते हो सर मॉक में अच्छे नंबर तो आ ही रहे हैं ना, मगर आप ये नैरो और स्पेसिफिक आइडिया मिस कर देते हो कि भाई थ्रू व्हाट डायरेक्शन दे आर रीचिंग दैट पॉइंट। सो हमेशा उसको भी देखो, वरना तो सारे के सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल एक ही जैसे लगेंगे। क्योंकि फिर आप क्या सोच रहे होगे कि पैसेज के लाइट में ट्रू क्या है, फिर तो इन्फरेंस भी मेन सेम है, मेन आइडिया भी सेम है, समरी भी सेम है, कंक्लूजन भी सेम है, असम्पशन भी सेम है, फिर तो सारे के सारे क्वेश्चंस ही सेम हो गए। क्योंकि आप ढूंढ क्या रहे हो कि पैसेज के अकॉर्डिंग सही क्या लिखा हुआ है ये बता दो, बस वही मेरा आंसर है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको क्वेश्चन रेफरेंस के बेस तभी तो पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज तो इंग्लिश और सीआर में डिफरेंस क्या हुआ बेटा? यही चीज तो उसको थोड़ा ट्रिकी बना रही है। The last passage in the row, जल्दी से करते हैं, we have less time because you have another subject to take care of, all right, and I also have a task to take care of। फटाक से इसको खत्म करते हैं। 19th, the Tamil Nadu government was quick to respond to the reports that migrant workers had started to flee the state following rumors that laborers from other parts of the country, particularly Bihar, were being attacked. Chief Minister M.K. Stalin issued a public statement commending the migrant workers for their contribution to Tamil Nadu and assuring them
ऑफ प्रोटेक्शन। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वहां से जा रहे हैं, और माइग्रेंट वर्कर्स वहां से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो बिहारीज और जो पर्टिकुलरली बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन पर अटैक हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी इशू के कारण वहां से जा रहे हैं। ठीक है, देन रिस्पॉन्स आया है वहां के चीफ मिनिस्टर का कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। नीबरिंग केरला too receives migrant workers. The state has been proactive in initiating social welfare schemes for them. Kerala has an estimated 3.5 million interstate migrants, according to a study commissioned by the Department of Labor and Skills. A study by the Gulati Institute of Finance and Taxation, the Thiruvananthapuram, says the state adds on average 1.8 lakh migrant workers annually. इतने आ रहे हैं। तो एक जगह उन्होंने किसकी बात करी? पहले उन्होंने बात करी तमिलनाडु की, फिर उन्होंने बात करी केरला की। ठीक है, फिर while Tamil Nadu uses the term migrant workers, Kerala calls them guest workers and replacement workers. Kerala is aware that its own workers prefer the Gulf, where they make more money than they could have made in their own home state. The state has identified the corridors of migration. Traditionally, Kerala has received migrant workers from neighboring Tamil Nadu and Karnataka. Of late, migrant workers have been arriving from UP, Jharkhand, Odisha, Bihar, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अभी तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरला इज अ पायनियर इन इंस्टीट्यूटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो आपके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसमें उन्होंने केरला को क्या किया है? कॉम्प्लीमेंट किया है। द स्टेट कंटिन्यूड अ वर्किंग ग्रुप ऑन लेबर माइग्रेंट अंडर इट्स 13th 5-year plan 2017 to 22. The fourth Administrative Reforms Commission (ARC) evaluated the implementation of welfare schemes for migrant workers. The Education Department has launched an inclusive program for the education of children of migrant workers. तो भाई education of children of migrant worker के लिए भी उन्होंने एक program लिया है. One of the goals of the सर्व शिक्षा अभियान is to make the children study in their mother tongue. अब उनके mother tongue में उनको पढ़ाना है. Volunteers have been roped in to teach children of migrant workers. In Tamil Nadu too, in the districts of Thiruvallur and Kanchipuram, government schools admit children of migrant labor. For children whose mother tongue is Odia, education volunteers were arranged by the Odisha government. Hindi books were brought from the states such as Madhya Pradesh. तो जो भी उनका मदर टंग है वहां पर उनको उसके लिए वॉलंटियर करके एजुकेशन दे रहे हैं। आगे इन केरला दी Kudumbushri initiative of women's empowerment and poverty eradication included migrant workers from other states. During the lockdown imposed to deal with the COVID-19 pandemic, the Kerala government ran more than 50,000 relief camps for migrant workers. Community kitchens and panchayats ensured no migrant worker went hungry. The Department of Health and Family Welfare, through the National Health Mission, introduced the link workers in 2020 to enhance access to healthcare for migrant families. Leaders identified among these workers were trained to provide information about the state's healthcare services. The Social Justice Department has set up mobile crèches for children of migrant workers at their places of work and construction sites. So देखो यहाँ पर ऑल टुगेदर इन्होंने ये बोला है कि हाउ दीज स्टेट्स, केरला के बारे में बात हुई, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ कि वो किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से वो डील करते हैं इस इशू से। ठीक है, या माइग्रेंट वर्कर्स के साथ कैसे डील करते हैं। इसमें ऑन द अदर एंड दे आर सेइंग कि केरला इन दी इज ऑन द ग्रेटर साइड, या फिर आप तमिलनाडु को बोलोगे। तमिलनाडु बोलता है माइग्रेंट वर्कर्स और केरला बोलता है रिप्लेसमेंट वर्कर्स और गेस्ट वर्कर्स। यहां से ही आपको समझ में आता है। चलो 19th, which initiative was taken by the Kerala government during the COVID-19 pandemic to ensure the migrant workers did not go hungry? अब क्या इनिशिएटिव था? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ये रिलीफ कैंप थे, तो यहाँ से ए करेक्ट होता है। बी बोलता है मोबाइल क्रैचेस, तो ये उनके बच्चों के लिए था, ये बी बॉम्बे एलिमिनेट होता है। वो हंगरी वाला पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। लिंक वर्कर्स अगेन एलिमिनेटेड, ये माइग्रेशन के लिए था। लॉन्च एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेशन, एजुकेशन से हंगर को रिलेट नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आगरा। इट वाज एन इजी वन। 20th, which one of the following if true would most weaken the author's argument? वीक करना है।
ए बोलता है द स्टडी कमीशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड स्किल इन केरला अंडर एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट्स इन दी स्टेट। यदि उन्होंने अंडर एस्टिमेट भी करा तभी भी ट्रीटमेंट दैट दे रिसीव इन बाय दोज गवर्नमेंट्स उस बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, तो रिलेवेंट हो जाएगा उस पॉइंट से, इररिलेवेंट हो जाएगा। बी, Kerala's Kudumbashree initiative did not include migrant workers from other states in its poverty eradication program। तो उन्होंने बोला कि भाई जो केरला का कुदम्बश्री इनिशिएटिव है उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, तो ये फैक्ट को रिफ्यूट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको रख रहे हैं। सी बोलते हैं तमिलनाडु डिड नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ कैंप्स फॉर माइग्रेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक, तो उन्होंने नहीं किया, फिर ये भी फैक्ट को रिफ्यूट कर रहा है। एंड डी, the mobile crutches set up by social justice department in Kerala were not functional due to the lack of funds। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है कि वो फैक्ट को रिफ्यूट कर रहा है, वो फैक्ट को रिफ्यूट कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर बोला कि केरला कुदम्बश्री ने यहाँ पर इंक्लूड किया इन माइग्रेंट वर्कर्स को इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी प्रोग्राम में, और आपने क्या किया वहां पर नॉट लगा के बोल दिया, तो वहां पर आपने फैक्ट को रिफ्यूट किया। यदि फैक्ट का रिफ्यूटेशन हो रहा है, दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी शुड चूज व्हेन वी आर गोइंग आफ्टर वीकनिंग द स्टेटमेंट और वीकनिंग द आर्गुमेंट। एंड ऑन द अदर एंड सी में भी वही हुआ, उन्होंने बोला कि तमिलनाडु ने प्रोवाइड किया रिलीफ कैंप्स और ये बोल रहे डिड नॉट प्रोवाइड रिलीफ कैंप्स। अब बताओ किस फैक्ट को रिफ्यूट करोगे आउट ऑफ दीज टू? तो फैक्ट के रिफ्यूटेशन को एलिमिनेट करते हैं। सर डी में भी तो फैक्ट का रिफ्यूटेशन किया बट विथ रीजनिंग। द मोबाइल क्रैचेस सेट अप बाय द सोशल जस्टिस, हाँ परिधि हट गया। सो द मोबाइल क्रैचेस सेट अप बाय द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इन केरला वर नॉट फंक्शनल। अब उन्होंने बोला है कि ये क्रैचेस तो उन्होंने सेट किए थे, अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो फंक्शनल नहीं थे क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं थे। जब फंड्स नहीं थे और वो फंक्शनल नहीं थे तो यू कैन नॉट यूज दैट इन द लाइन ऑफ रीजनिंग जिससे तुम स्ट्रेंथन कर रहे हो अपने आर्ग्यूमेंट को कि क्रैचेस तो एस्टैब्लिश किए थे। अब वो क्रैचेस एस्टैब्लिश कर लिए थे, इफ ट्रू लिखा हुआ है बेटा, सयान क्या है, सयान सयान ही नाम है आपका, सयान। इफ ट्रू लिखा हुआ है तो इफ ट्रू में एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप इंक्लूड कर सकते हो, इफ ट्रू नहीं लिखा होता है तो आप डायरेक्टली जाते हो। ठीक है, तो डी दिल्ली फॉर 20। ये बेसिक चीजें ही आइडेंटिफाई करनी है यार, इसी कारण से सही होते हैं या गलत होते हैं आपके आंसर्स। 21, विच इंडियन स्टेट हैज डन मोर टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, किसने ज्यादा किया? तमिलनाडु विच हैज अ वर्किंग ग्रुप ऑन लेबर माइग्रेशन, केरला which has identified corridors of migration and run relief camps for migration workers। और उन्होंने बोला ही है तमिलनाडु और केरला केरला को उन्होंने जब कोरिलेट किया तो उन्होंने बोला तमिलनाडु माइग्रेंट वर्कर्स बोल रहे हैं और फिर ये गेस्ट वर्कर्स बोल रहे हैं, तो वहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि वो सारी स्कीम्स जो है किसके फेवर में गई थी। वी कैन प्रोवाइडेड दैट वी डू नॉट हैव अदर चॉइसेस। That I said that is going to be the last thing I would choose if I am to weaken the argument। Anirban, I hope you understand it now। Both Tamil Nadu and Kerala have similar initiatives, तो similarity नहीं बताना है, एक को better बताना है। Neither Tamil Nadu nor Kerala, तो ये दोनों को refute कर रहा है। Easy answer option B, Bombay। I hope you understood it। 22nd, which one of the following is the author most likely to disagree? क्या करना है? disagree करना है migrant workers के लिए। ए बोलता है माइग्रेंट वर्कर्स इन केरला आर नॉट एडिकेटली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट एडिकेटली प्रोटेक्टेड। अब ये एडिकेट जो टर्म है ये इस चीज को वेक कर सकता है। सी, तमिलनाडु एंड केरला बोथ हैव इफेक्टिव मेजर्स, दोनों के पास है, एक को उन्होंने बेटर बोला है इसलिए यहां से एलिमिनेट होता है ये। ठीक है, सुमन्यु वहां पे मैं जा रहा हूं। सी, the term migrant workers used in Tamil Nadu should be replaced with guest workers। तो this is disagree नहीं, वो agree कर जाएगा फिर तो, क्योंकि वो फेवर में बात कर रहा है उसके। एंड डी, केरला सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स आर नॉट सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस। नाउ केरला का सोशल वर्कर वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स वहां पर दिए हैं। अब देखो एडिकेटली प्रोटेक्टेड का मैं प्रोटेक्टेड है मगर एडिकेटली नहीं है, तो ये एडिकेट टर्म वहां पर वेक हो जाएगा। ये तमिलनाडु एंड केरला बोथ इफेक्टिव मेजर्स हैं दोनों के पास, तो वहां पर केरला को वो बेटर बोल रहे हैं तमिलनाडु से, तो इसलिए ये बोथ टर्म वहां से वेक हो जाएगा। 38, 38 डी, केरला सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स आर नॉट सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस। अब जब तुम यहां पर जा रहे हो अग्री कर डिसअग्री कराना है, तो आप देखो 22nd में पूरा का यहां से उसने केरला के बारे में बात करी, तमिलनाडु का इंट्रोडक्शन किया,
फिर उन्होंने केरला के बारे में बात करी। द स्टेट हैज बीन प्रोएक्टिव इन इनिशिएटिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अब पूरी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर क्या स्कीम किया, लेबर ने क्या स्कीम किया है, जीआईएफटी ने क्या स्कीम किया है, ठीक है। ये सारे स्कीम्स के बारे में आपने बात करी, तो फिर आपका रेफरेंस किधर मिलेगा परिधि, ए और डी में से? डी, डिसअग्री, क्योंकि जाके फिर तुम उधर, तो तुम लोग स्पेकुलेट करते हो, मैं वहां पे ढूंढ के एविडेंस देखता हूं कि देखो ये लिखा हुआ है, अब इसको रिफ्यूट करो, अब मैं तुम्हें लिखा हुआ दिखा दूंगा और बोलूंगा इसके अगेंस्ट बोलो, तो तुम कैसे बोलोगे? वहां से मेरा आंसर फिक्स होता है बेटा, रेफरेंसेस करेक्ट होने चाहिए। 23rd, which Indian state has been proactive in initiating social welfare schemes for the migrant workers? ए बोलता है तमिलनाडु, which commended migrant workers for their contribution and assured them of protection. Kerala, which identified corridors of the migration. तो ठीक है, सी, बिहार, बिहार और कर्नाटका तो चले गए, तमिलनाडु और केरला में केरला को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो आंसर होना चाहिए बी, बॉम्बे। ठीक है, द लास्ट इन द रो, what is the main difference in how Tamil Nadu and Kerala refer to migrant workers? तो क्या डिफरेंस है तमिलनाडु और केरला में? ठीक है, ए बोलता है तमिलनाडु refers to them as guest workers and Kerala calls them migrant workers. This is opposite. B, Tamil Nadu refers to them as replacement workers and Kerala calls them migrant workers. Again, Kerala calls them replacement workers or guest workers. To be eliminated. C, Tamil Nadu and Kerala refer to them as migrant workers in the same way. And D, Tamil Nadu and Kerala use different terms to refer to migrant workers based on their state of origin. So D, Delhi भी state of origin हो जाता है, तो यहां से D eliminate हो जाता है। ठीक है, just give me a minute. Yeah, yeah. So this was an issue, right? So यहाँ पे C is not the up to the mark choice. So this is considered. This one is considered, yeah. Okay, चलिए। So हाँ, सो यहां पर देखो तो अब ये तमिलनाडु और केरला वाला तो अगेन ही फोर, अभी इसमें सिक्स ना काउंट करके मैं यदि फाइव काउंट करूं तो आउट ऑफ फाइव वो फाइव ही जाने थे, फोर ले लेते हैं, यदि फोर हमने लिए भी तो 3.75 यहां से आते हैं। ठीक है, 3.75। सो ऑल टुगेदर इफ यू talk about this complete mock, out of these 24 questions, ठीक है, the safe score that you could have got is around 17 to 20. This is where your score should lie. ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम नेक्स्ट मॉक जब हमारा होगा उस नेक्स्ट मॉक में मिलेंगे। आई थिंक कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, एक अटेम्प्ट मैंने किया अपनी साइड से कि जितना मैं आपको समझा पाऊं कि उसका एक जनरल अप्रोच क्या हो सकता है, ताकि आने वाले मॉक्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। So please feel free to share your suggestions for the days to come. Also, and please feel free to tell us how you think of this particular mock analysis. I hope you enjoyed it. I hope you learned something out of it. I hope you got that understanding कि भाई यदि मैं फंसी गया हूँ, मुझे दो equally convincing choices दिख रही हैं, तो मैं वहां पे कॉल कैसे लूंगा? All right, चलिए, so I'll reconnect with you in the days to in the next session. Till then, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बहुत सारा प्रसन्न रहो, बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। गुड डे।